सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम करते हैं अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 7 थ्योरी एंड ऑल। सो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 बराबर मोशन। So first question is an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter. So first step is to read out questions 2-3 times बराबर। आपको 2-3 बार क्वेश्चन समझने हैं। So first given is क्या क्या दिया है। First one is just write down the given. An athlete means a runner. Athlete means a runner बोला। एक person एक runner है basically। Completes one round of a circular track. A circular track is given. Suppose this is circular track. मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। So suppose a circular track is given. This is circular track. So an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter. So circular track is given and diameter कितना दिया है? Diameter is 200 meter. Diameter means diameter मतलब पूछा 200 meter बोल रहे हो। Diameter means the line passing from center from one point to the other point. So diameter is given 200 meters. So first I write down the given. So given में आपको दिया है diameter. So write down given diameter is 200 meter. अगर diameter 200 में that means radius कितना हो जाएगा? Then radius is diameter upon 2 that means 100. 200 upon 2 means 100. So first thing is given a circular track is given. This is a circular track. बराबर a person say an athlete a person is running. Say this is an athlete. Athlete completes one circular track in 40 seconds. Means completes one circular track in 40 seconds. So this is mentioned. So given is diameter about 200 meter, then radius we find about 100, and given is this person athlete completes one circular round in 40 seconds. Then what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 meter 20 second? Means find distance and displacement. Find distance and displacement at the end of 2 minute 20 second. So 2 minute 20 second means how many seconds? 2 minute 20 second मतलब कितने seconds होंगे? 2 minute means 120 second and 20 means 140 second. So 2 minute 20 second means 140 seconds. So that is 2 minute 20 second means 2 minute means 120 second plus 20, that means 140 second. So question asks find distance and displacement after 140 second. Question is a person, suppose an athlete or a person starts running from point A barabar and completes one circular track in 40 seconds. Now find distance and displacement after 140 second. Means 40 second में एक complete चक्कर मार रहा है, then 140 second में वो कितना चक्कर मार लेगा? First find out the number of circles. Number of circular track he did. Number of circles कितना complete किया? First find out करो. 40 second में 1 circle, then 80 second में 2 circle, then 120 second में 3 circle, then 160 second में 4 circle ना? So क्या 160 सेकेंड ट्रेवल होगा? नहीं, गिवन 140 सेकेंड मीन्स 120 मीन्स 3 सेकेंड 3 सर्कल कंप्लीट हो गया, 160 मीन्स 4 सर्कल, बट द टाइम इज 140 सेकेंड ही दिया है, दैट मीन्स 3 and 4 के बीच में आएगा। देखो क्वेश्चन सिंपली है बेसिकली नंबर ऑफ सर्कल्स, फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ राउंड्स, then we are going to with distance and displacement. So one complete circle covers in 40 second. एक पूरा चक्कर मार रहा है इन 40 seconds बराबर, और ही ran about 140 second तक दौड़ा। सो कितने चक्कर मार लिए होंगे? 40 सेकेंड में 1 complete circle, then 1 circle in 40 second, 2 circle in 80 second, 3 circle in 120 second, मतलब 3 सर्कल तो कंफर्म किया है, then 4 circle in 160 हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 40,
बट 4 सर्कल तो हुआ नहीं है क्योंकि 140 इज गिवन. सो बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4. सो इसको देखते हैं. सो हाउ टू फाइंड? सो नंबर ऑफ राउंड्स और नंबर ऑफ सर्कल मीन्स टोटल टाइम इज गिवन 140 सेकेंड and give for one circle it is given 40 second. So let's divide out 140 divided by 4, that is 14 divided by 4. 14 divided by 4, 4 3s are 12, 2 0, 4 5s are 20, that means 3.5 round. So उसको 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा. So a person बराबर running in a circular track completes one circular track in 40 second, then after 140 second he covers 3.5 round. 3.5 round means one round come back to point A, another round, third round and 3.5 round means here यहाँ पे आकर रुक जाएगा. Then after 3.5 round person reaches at point B. Okay, तो ये तो बस जस्ट एक रेफरेंस फर्स्ट हमने कंप्लीट किया. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200. यहाँ से हमने रेडियस निकाला. डन. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स. सो अब फाइंड करना है हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट मीन्स 140 सेकेंड. अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. चलो याद रखुआ, आ जाओ आगे. सो नाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ टू फाइंड डिस्टेंस. ओके, so for one complete circle, now distance is for one complete circle, distance is equal to circumference of circle. अगर एक चक्कर कंप्लीट मार रहा है तो डिस्टेंस कितना होता है? ये पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट मीन्स 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r. सो डिस्टेंस इज 2 पाई r. सो फॉर वन सर्कल डिस्टेंस इज 2 पाई r. ओके, कितना सर्कल दौड़ा? नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ सर्कल 3.5. सो फॉर 3.5 circle or rounds, so distance is 3.5 into 2 pi r. For one circle distance is 2 pi r. For two circle distance is 2 into 2 pi r. For 3 circle distance is 3 into 2 pi r. For 4 circle distance is 4 into 2 pi r. For 5 circle distance is 5 into 2 pi r. हर सर्कल का 2 pi r है ना. एक सर्कल का 2 pi r, दो सर्कल का 4 pi r, तीन का 6 pi r and so on. So for one circle it is 2 pi r. Then for 3.5 circle around distance is 3.5 into 2 pi r. That means कितना हो जाएगा? 7 pi r. 3.5 into 2 7. Value of pi is 22 by 7 और 3.14. And value of r कितना दिया है? 100. That means 7 and cancel out. 22 into 100 means 2200 meter. बराबर 2200 meter. बराबर. So distance equals to, for one circle distance is 2 pi r. For 3.5 rounds distance is 3.5 into 2 pi r, that means 7 pi r. So 7 pi r means 7 into 22 by 7 into 100, because 22 into 100 that means 2200 meter. So ये आपका distance complete हुआ. Now moving forward, so distance is about 2200 meter. Now to find displacement, question asks what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. Now the distance we done. Now displacement. So displacement. So displacement is the shortest distance. What is displacement? Displacement is the shortest distance from initial and final positions. So initial position of a person is, क्या था initial position? Initial position is point A and final position क्या है? Point B. So what will be the distance? Displacement is the minimum distance from initial and final position. So initial position is point A. Point A is the initial position. Point A is the initial position. Point B is the final position. So minimum distance between initial and final position is this distance. Straight line, na? Shortest path. Shortest path is straight line. So displacement is 200 meter. That is straight path. That is 200 meter. Okay. Moving forward, now second question. So exercise question number 2. Question says Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds.
मीन्स अ पर्सन नेम जोसेफ, और यू कैन से एनी नेम, राम, श्याम, जो नाम अच्छा लगे. ही स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड रन्स टुवर्ड्स द अदर एंड. एक पर्सन है जोसेफ, स्टार्ट किया पॉइंट ए, देन मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट रोड ऑफ 300 मीटर. सो गिवन इज फर्स्ट द टैग इज गिवन इज अ स्ट्रेट रोड, point A and you say point B. A person named Joseph jogs from, jog means just walk या jogging, jog from one end of A to the other end B of a straight road, बराबर, that is 300 meter in 2 minutes 30 seconds. Means a person starts from one end and move towards the other end, बराबर. Distance is given 300 meter, time taken 2 minutes 30 seconds. Okay, so you move from one end to the other end of 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. That is given. So distance is given 300 meter. Distance दिया है, A से चालू किया, B की ओर गया, बराबर. डिस्टेंस कितना दिया है? 300 मीटर दिया है स्ट्रेट रोड पे. टाइम कितना लगा? सो टाइम इज गिवन 2 minutes 30 seconds, means 2 minutes 30 seconds, means 2 minutes 120 and 30 means 150 seconds. So time is 150 seconds given. Okay, so a person Joseph starts from point A and move towards B, point B. Road length given 300 meter, time taken 150 seconds. Okay, now then he turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Suppose I am Joseph's, barabar, I am Joseph, I am running from point A to point B, बराबर, एंड देन अगेन रिटर्न बैक टू पॉइंट सी. मतलब ए से बी तक गया मैं, एंड देन रिवर्स होके 100 मीटर में वापस आ गया. देन अगेन रिटर्न्स बैक 100 मीटर, 100 मीटर वापस आ गया. तो मैं यहां से 100 मीटर क्या किया, वापस आ गया एट पॉइंट सी पे. कितना टाइम लगा? 1 minute. 1 minute means 60 seconds. Okay, so question asks, what are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? So given is from A to B, distance from A to B, distance is 300 meter and time is 150 seconds. Barabar. Now from B to C, distance is 100 meter and time taken 60 seconds. So question is clear. A person named Joseph starts from jogging or running from one end A towards the other end B, barabar, in a 300 meter road. Time taken is 2 minutes 30 seconds, that means 150 seconds. Then he again return and come back 100 meter at point C in 1 minute, that is 60 seconds. So find करना है आपको, क्या find करना है? Average. Find average speed. So average speed कहाँ से कहाँ तक? From A to B. So first scenario is A to B. A में करना है A to B में. चलो देखो इधर. So A to B. So A to B में, तो A to में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो A से B तक टोटल डिस्टेंस कितना है? A to B 300 मीटर. टोटल टाइम इज 150 सेकेंड. So that means 30 upon 2 meter per second is the average speed from A to B. Now second is given A to C. A to C में क्या दिया? एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नाउ A to C कितना डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस A से C तक पर्सन दौड़ा तो कितना डिस्टेंस होगा? A से C तक जोसेफ गया, फ्रॉम A to B गया, देन अगेन रन्स फ्रॉम A to C. कितना मीटर कवर किया डिस्टेंस?
100 कैसे? A to C बोला है ना, फ्रॉम A to C, नॉट B to C. From A to B covers 300 meter and from B to C again 100. Total 300 plus 100, 400. 300 plus 100. And total time from A to B, time is 150. From B to C, time is 60. So 400 upon 210 seconds. That means 1.9 approx meter per second. So first question is done. Now second we have to find average velocity. Question क्या दिया है? A person named Joseph, उसने स्टार्ट किया जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट A से B की ओर गया. ओके 100 मीटर्स 300 मीटर स्ट्रेट रोड पे गया, उसको टाइम लगा, दैट मीन्स 150 सेकेंड टाइम लगा. अगेन ही टर्न्स बैक, उसने वापस आया, वो वापस आया 100 मीटर बराबर, टाइम लगा 60 सेकेंड, दैट मीन्स 1 मिनट. सो बोला है फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड फाइंड करना है फ्रॉम A टू B. सो A टू B में एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो A टू B में टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, टोटल टाइम इज गिवन 150. 300 अपॉन 150 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ सेकेंड इज गिवन, A टू C आपको फाइंड करना है. सो A टू C में फॉर्मुलाइज्ड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस इज फ्रॉम A टू B 300 and B to C is 100. Total 300 plus 100 that means 400. So total distance is 400 and total time taken is 210. 150 time and then 60 then 210. When you divide it 0 0 cancel out, 40 upon 21 approx you get 1.9 meter per second. Now also find Joseph average speed and velocity. Now same average speed for A to B and average velocity from A to B and average velocity from A to C. Now second question, average velocity. Average velocity is from A to B. A to B average velocity formula is given as total displacement upon total time. Now from A to B total displacement is, A से B तक total displacement कितना रहेगा? Now suppose this is end A and this is end B. तो यहाँ पे total distance कितना आया? मान लो वहां से यहाँ तक 300 मीटर था ना, तो मैं suppose I start यहाँ से चला मैं, तो 300 मीटर चला मैं, यहाँ क्या रुक गया B पॉइंट. सो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर. और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट ना फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल. सो अगर मैं इनिशियल वो है फाइनल, जिनके पीछे गैप भी तो 300 रहेगा ना. मैं B पॉइंट तक की बात कर रहा हूं, नॉट एट C पॉइंट. C A से चालू किया, मैं B पे आके रुक गया, दैट मीन्स डिस्टेंस 300 एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा. सो अप टू B डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर दोनों सेम है अप टू B. So average speed total displacement up to B is from A to B is 300 and time is 150, that means same 2 meter per second. From A to B distance and displacement same है इसके लिए. Now B scenario, from A to C, A to C is average velocity, total displacement अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना फ्रॉम नाउ फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू C टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो इनिशियल ये फाइनल ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दिस इज 200 मीटर ना, ये 100 वापस आ गए, 200 है. सो A से C के लिए 200 मीटर. सो फ्रॉम A टू C टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 200, टोटल टाइम इज 210 which gives approx 0.9 meter per second. So that's it. यह आपका क्वेश्चन रहा, सेकेंड क्वेश्चन. सो V बराबर, चलो अब इसको, सो थैंक यू.